Hello everyone. Good evening. How are you all doing? Today's life is gonna be very interesting because the topic is love and relationships from the legal aspect. So stay tuned to know more about it, where we stand legally in the country, and also what are some of the major cases and how we can leverage some of the rights. I'm good as well. Thanks for asking. We'll just begin very shortly. So, these lives are in collaboration with Nyaya. Nyaya is an open access digital resource that provides simple, actionable, reliable, and accessible legal information in multiple formats audio, visual, even written. And that can really help citizens' day to day legal problems and make them aware of their rights. Hi. Hi, Kanav. So, I was just telling people what today's live is about and about Nyaya. So today we have with us the expert Kanav, who is communications manager at Nyaya. Thanks so much for joining us today, Kanav. Pleasure is all mine. I'm How doing are you doing? good. You tell me, how are you? I'm good as well and very excited because the topic is love and relationships, which I mean, who doesn't like that topic, right? But today mm, the topic will be a bit different because we're going to discuss some legal things, some legal aspects. We're going to talk about the law. So I think it's very important in a way for the community to understand it and to know about the cases which are there, some of the judgments which might help them, and at the same time where we stand regarding love. So without further ado, I would like to start with a very important question because today is 15th April as National Transgender Day. Landmark judgment of NALSA was Union of India Litigation. So, what Before I answer that, I just want to ask something. In the previous live, we received some questions from people where they said that they would be comfortable in English or Hindi. So would it be okay if I speak in English and Hindi? That okay, that's great. And is my voice audible? It's not breaking, right? it's not big, but there Okay, there is some lag. Is it better I now? can't Is the hear lag gone? all Okay. good. So today is actually the 9-year anniversary of the नालसा judgment. तो जिनको ये पता नहीं है नालसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को लीगली रिकॉग्नाइज किया ये 2014 में हुआ था दिस हैपेंड इन 2014 एंड 2014 तक हमारे देश में ये जो थर्ड जेंडर था ये हमारे कोर्ट्स हमारे गवर्नमेंट्स ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था लीगली तो अगर आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते या कोई गवर्नमेंट फॉर्म फिल करते यू वुड सी दैट मेल फीमेल का ही ऑप्शन था तो ये जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना कि सिर्फ कोर्ट ने बताया कि एक थर्ड जेंडर है जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे लॉ के अंदर कोर्ट ने ये भी बताया कि ये जो थर्ड जेंडर है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है हैव सफर्ड अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी और ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो स्टेट्स है सो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपलिफ्ट करे कैसे अपलिफ्ट करे वन मोड इज थ्रू रिजर्वेशन तो कोर्ट ने क्या किया था कोर्ट decided that जो OBC category, other backward class category, which consists of socially and educationally backward communities,
कोर्ट ने ये अपने नालसा जजमेंट में लिखा था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस ओबीसी कम्युनिटी के अंदर फॉल करेगा एंड हेंस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था जजमेंट का। दूसरा तो मैंने बताया है कि थर्ड जेंडर रिकॉग्निशन, और तीसरी बात है कि जेंडर सेल्फ आइडेंटिटी, जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। मतलब हमारे समाज में हमें बहुत ही लंबे टाइम से हमें यही बताया गया है कि दो ही जेंडर्स है, मेल फीमेल, बट एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल प्रूव्स दैट वो ट्रू नहीं है, थर्ड जेंडर है। लेकिन ये कैसे हम ये प्रूव कैसे करेंगे कि मैं थर्ड जेंडर का हूं? तो कोर्ट ने साफ साफ लिखा है जजमेंट में दैट द राइट टू आइडेंटिफाई योर जेंडर लाइज विद द पर्सन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। ये एक फंडामेंटल राइट है ट्रांसजेंडर पर्सन का। तो ये है नालसा जजमेंट का क्रक्स, वाई इट्स इंपॉर्टेंट। अभी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखोगे मेल फीमेल ऑप्शंस होते, थर्ड जेंडर ऑप्शन नहीं होता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में अभी तक आई विल नॉट से देयर इज मच अवेयरनेस, बट गवर्नमेंट स्पेसेस में ये अब लॉ बन गया है एंड इसीलिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आप थर्ड जेंडर ऑप्शन देखोगे। आपका आवाज ऑडिबल नहीं है, सॉरी। I was on mute. Thank you for stating the important points. It's really to understand कि उस जज क्या major points थे जिनको वो यूज कर सकते, ना कि सिर्फ यूज कर सकते हैं बट समझ सकते, so that they don't face any problem in their lives. And as for the private sector, so I am assuming now being a fundamental right, even if someone is getting discriminated based on the gender identity, they can use that as a fundamental right to defend themselves, right? So the nature of the judgment was it was directed to the state government and the central government, not to private entities, unfortunately. तो इसीलिए प्राइवेट एंटिटीज अपने अपने कंपनीज में लॉज रूल्स बना सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दोज रूल्स मे और मे नॉट बी इंक्लूसिव। यस, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आप एक ट्रांसजेंडर या होम गे पर्सन हो या जो भी एलजीबीटी कम्युनिटी के हो, एंड इफ यू फील दैट यू आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, you may be able to, you could potentially take legal action, but जो crux of the judgment था वो that was focused on establishing the relationship between the state, which means the public, mostly the public sector, and the transgender community. But you're right, it is a fundamental right. तो ये ना कि jobs प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में ही एप्लीकेबल होगा, बट ऑल्सो शुड अप्लाई इन योर पर्सनल लाइफ। मतलब डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फैमिलीज, abandonment by parents, abandonment by your siblings, these are also issues that courts have taken cognizance of and should take cognizance of. Right, thanks for clarifying that. I hope everyone got to know about the nature of this judgment and how it is important for queer rights. Now, coming back to the topic of today's life, love and relationship, a very important topic and a very discussed topic everywhere, especially in the community. Today, we will discuss more from the legal perspective. So, my first question and important is right. I'm sorry, could you repeat that again, please? Does the law give us Does the law give us the right to love freely? Yes, it does. So basically, ये एक मिसकंसेप्शन है, आई थिंक काफी लोगों को ये के पास ये मिसकंसेप्शन है दैट यू कैन नॉट एंटर इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप। अगर टू पीपल ऑफ द सेम सेक्स अगर वो एक साथ रह रहे हैं, इट्स अ प्रॉब्लम। द आंसर इज अ कैटेगोरिकल नो. The Supreme Court has held in multiple judgments that you do have the right to live with somebody of the same gender, of the opposite caste, of the opposite religion, of the same caste, same gender, same religion. That freedom to love and the freedom to live with your loved one is not a crime. So I want ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, because moral policing बहुत होती है, and कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स
sometimes family members threaten and say, if you are living with your live-in partner, हम एक तुम्हारे against एक FIR file करेंगे या हम पुलिस में complaint करेंगे. Those threats can be made. I mean, that's unfortunate that that these threats are made, but as per the rule of the law, people should understand that it's not a crime. So I want to mention a couple of important things. First thing is, everyone should be aware of a very important judgment called the Hadia judgment. ये 2018 में Supreme Court ने hand out किया. It involved a woman जो 25 years की age में थी. She met a Muslim man. Muslim man का नाम था शफीन जहान. She converted to Islam and married him, and this caused a lot of problems in her family. People were like, ये तो convert हो गई है, Islam में convert हो गई है, ये ये कुछ she's being manipulated, ये आदमी के साथ चली गई है. It caused a lot of trauma to her husband and to society. ये केरला हाई कोर्ट पे चला गया, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट पे चला गया. Supreme Court held that and I'm quoting this, that the right to marry a person of one's choice is an integral part of the right to life and personal liberty guaranteed under the Constitution of India, and all this includes the right to choose your religion. इसका ये मतलब है कि अगर आप एक opposite religion के साथ शादी करना चाहते हो या लिव इन करना चाहते हो, वो अलाउड है. एक और केस है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, which talks about intercaste marriages, where कोर्ट ने बोला कि राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जब हम सेम सेक्स मैरिज की बात हम बाद में करेंगे, हम ये बोल रहे हैं कि राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट, और कोर्ट ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया है कि आप रिलीजन बदल सकते हो, आप इंटरकास्ट मैरिज में जा सकते हो. एंड एक और कोर्ट केस है विच इज इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा, which was about live-in relationships, in which the court had held that a live-in relationship is neither a crime nor a sin. So live-in relationships भी allowed है, but marriage शादी से अलग है. कोर्ट ने ये भी बताया कि while live-in relationship is not a crime, it is not the same as a marriage. So, but it is not a crime. तो live-in relationship crime नहीं है, intercaste marriages crime नहीं है, inter-religious marriages crime नहीं है. अब लोग क्या बोल रहे हैं कि same sex relationships भी crime नहीं है. वो 2018 नफ्तेज जजमेंट में ये कोर्ट ने साफ साफ बताया कि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन टू कंसेंटिंग अडल्ट्स इन द प्राइवेसी ऑफ देयर होम इज आल्सो नॉट अ क्राइम. दैट वाज द लैंडमार्क, वो 377 जजमेंट जो सबको पता होगा. तो ये सब चीज कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि टू आंसर योर क्वेश्चन, इट इज नॉट अ क्राइम टू लव anyone you wish, as long as you're above the age of 18. ये important चीज है. POXCO Act है, it relates to minors. Underage children के साथ there are restrictions, and for good reason, but not amongst adults. And this applies to transgender community also, by the way. Okay. Thanks so much for answering that, Kanan. My next question is in the context of what you just said of the judgment. So what are the implication of this particular judgment? ये तो बहुत ही important judgment है, because ये 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये एक पेटिशन के रिस्पॉन्स में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था 2009 में. तो it was a very big moment. People were very happy. Then 2013 में there were I believe it was a two judge bench of the Supreme Court. They held that जो Delhi High Court ने rule किया था वो गलत है. This was called the Suresh Kaushal case. So they overturned the Delhi High Court judgment. तो 2013 में people started losing hope कि वापस homosexuality criminalize हो गया. फिर finally after a lot of efforts काफी सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए, and they realized we will have to challenge this 2013 judgment. फिर एक 5 judge bench was formed to look at the Kaushal judgment, and वो था नफ्तेज, हमारा जो नफ्तेज judgment है. And they found that जो सुरेश कौशल में जो भी conclusions बने थे, निकले थे, वो गलत थे. And that is why homosexuality was decriminalized. So what did the court find? The court found that
LGBTQ कम्युनिटी इज अ मिनिस्क्यूल कम्युनिटी, ये तो हमें पता है कि हमारे समाज में हेट्रोसेक्सुअल लोग, सिसजेंडर लोग काफी बहुत ज्यादा है। LGBT लोग इज अ स्मॉल कम्युनिटी, बट उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है that is very very real, and they should be given equal protection under the law, and they deserve all the fundamental rights that other people deserve. ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज नेचुरल नॉर्मल, तो कोई बोल नहीं सकता कि अब नॉर्मल है, ये भी था। दूसरी बात है कि कोर्ट ने बताया दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन शुड बी गिवन टू सेम सेक्स पीपल, सॉरी गे टू द होमोसेक्सुअल पीपल। तो इस जजमेंट के साथ ना कि कोर्ट ने सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया, बट ये भी बताया दैट दिस इज अ कम्युनिटी दैट डिजर्व्स रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट एट होम एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस। इसीलिए हम ये केस अब हम इसीलिए जो अभी सेम सेक्स मैरिज की जो चर्चा हो रही है, लॉयर्स आर सीइंग इट एज एन एक्सटेंशन ऑफ नवतेज, कि नवतेज ने तो बस डिक्रिमिनलाइज किया, बट डिक्रिमिनलाइज का मतलब ये है कि तुम अब क्रिमिनल नहीं हो, बट अगर तुम्हें शादी करना है अपने जिसके जिसके साथ तुम प्यार करते हो, वो अभी भी क्राइम है हमारे, सॉरी वो अभी भी अलाउड नहीं है, लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है। बट apart from that, since you asked what were the implications of the judgment, I would say that it has led to more people being able to come out, because अब उनको पता है कि ये एक crime नहीं है, तो they can come out more. It has led to more media representation. अब आप देखोगे बॉलीवुड में, OTT प्लेटफॉर्म्स में काफी सारे LGBT कैरेक्टर्स आ रहे हैं। सेंसरशिप भी कम हो रहा है। पहले जब फॉरेन मूवीज जो LGBT थी, जिसके LGBT थीम्स होते थे, वो इंडिया में सेंसर होते थे, अब वो नहीं हो रहा है। So you'll see that movies which have LGBT themes, like maybe Hollywood movies, they are able to, the censor board cannot censor them because हमारे कंट्री में क्राइम नहीं है। दूसरे कंट्रीज में देखो, जैसे सऊदी अरेबिया में, कतर में अभी भी काफी सारे मूवीज है जो सेंसर हो रहे हैं, बिकॉज उन कंट्रीज में होमोसेक्सुअलिटी क्राइम है। तो विजिबिलिटी बढ़ रहा है, एंड देन ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी ओपन अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव अबाउट गे राइट्स, जैसे ह्यूमंस, ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ क्वेयर। अब अगर ये जजमेंट नहीं होता तो पीपल कुड ऑलवेज से कि तुम एक क्रिमिनल एक्टिविटी को सैंक्शन कर रहे हो बाय प्रमोटिंग गे राइट्स। अब वो आर्ग्यूमेंट ही इनवैलिड है। तो इट हैज बेसिकली मेड इट मोर इजी एंड मोर एक्सेसिबल, एंड नॉट एक्सेसिबल बट मोर एक्सेप्टेबल टू टॉक अबाउट होमोसेक्सुअलिटी। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट आउटकम है इस जजमेंट का। Thanks for discussing that. On the same line, would like to ask that what are the rights that members of the community received after the judgment? We talked about how the judgment came out, what was the whole process, how it started. But if you could, you maybe list down the rights which are now there for the community because of this judgment. So one right, I think the most fundamental right is that तुम्हें ये हक, तुम्हारे पास अब ये हक है कि तुम अपने जो भी सेम जो भी तुम्हारा प्यार है, या जो जिससे तुम प्यार करते हो, जो सेम सेक्स का है, तुम उसके साथ ये कर सकते हो, और ये कानून के खिलाफ नहीं है। विच मीन्स दैट अगर तुम उनके साथ रहना चाहते हो, अगर तुम उनके साथ बाहर जाना चाहते हो, अगर तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कोई ये नहीं बोल सकता है कि ये जो तुम कर रहे हो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, एंड हेंस मैं तुम्हें जेल में डाल सकता हूँ या तुम्हें कोर्ट में ड्रैग कर सकता हूँ। पहले ही हमेशा ये डर था कि अगर पुलिस को पता चलेगा, या अगर फैमिली मेंबर को पता चलेगा, या कोई, यू कुड से समवन हु वांट्स टू टेक रिवेंज, को पता चलेगा कि दे आर इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप या होमोसेक्सुअल है, तो ब्लैकमेल करने का अपॉर्चुनिटी था कि ये कानून के खिलाफ है, आईपीसी सेक्शन 377 को इन्वोक कर सकते हैं, हम तुम्हें जेल में डाल सकते हैं। एक और प्रॉब्लम होता था कि people would record gay people having same sex, like having sexual intercourse, and blackmail them कि ये वीडियो जो है अब मैं लीक करूंगा और तुम्हें जेल में डालूंगा। अब ये राइट्स अब ये सब नहीं चलेगा हमारे अब। नाउ दिस इज नॉट, these are new, this will not be held in the court of law, because now same sex intercourse between consenting adults above the age of 18 is now legal. So you have the right to be in a relationship
मैरिज अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है, बट रिलेशनशिप तो हो, रिलेशनशिप में जा सकते हो, कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हो, एंड पब्लिक स्पेसेस में भी यू कैन मूव फ्रीली, बिकॉज कोई ये नहीं बोल सकता कि अच्छा मैं तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करके तुम्हें पुलिस एक पुलिस कंप्लेंट करूंगा। ये हक एलजीबीटी स्पेशली होमोसेक्सुअल पीपल के पास है। बट मुझे ये भी बताना है कि इसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड। अभी भी काफी सारे पेरेंट्स, काफी सारे फैमिली मेंबर्स आर कंजर्वेटिव, एंड अभी भी लोग डरते हैं। तो पीपल आर नॉट आउट अबाउट द रिलेशनशिप, एंड लोग अभी भी स्कैर्ड है कि अगर पुलिस कंप्लेंट जाएगा तो मेरा रेपुटेशन खराब हो सकता है। अगर मेरे एम्प्लॉयर को पता चलेगा, दे कैन फायर यू, एंड इफ एन एम्प्लॉयर फायर्स यू बिकॉज दे फाइंड आउट यूर गे, there is still no provision under the law that you can actually hold the employer accountable, because हमारे देश में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज भी है याद रखने के लिए कि हमारे देश में वी डोंट हैव an overarching anti-discrimination law that includes um, um, people of that includes discrimination against homosexuals, etc. SC/ST Atrocities Act है, which protects SC/ST community, but we don't have something like an LGBT Atrocities Act, for example. ठीक है, तो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉब्लम है। एंड somebody ने ये भी बताया कमेंट सेक्शन में that it could be a grounds for divorce, so that could be true depending on which personal law you are following, कि अगर आपको पता चलेगा कि आपका हस्बैंड इज एक्चुअली क्लोजेटेड होमोसेक्सुअल एंड वो चीट कर रहा है दूसरे लोगों के साथ, देन यू कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइल फॉर डिवोर्स, बट यू कैन नॉट सेंड हिम टू जेल फॉर बीइंग होमोसेक्सुअल। वो आईपीसी 377 का कानून, तो वो पोर्शन हैज बीन स्ट्रक डाउन। सो यस, इट कुड बी ग्राउंड्स फॉर अ डिवोर्स, बट नॉट अ ग्राउंड्स टू पुट हिम इन जेल फॉर बीइंग गे। वो मुझे क्लियर करना था क्योंकि कमेंट सेक्शन में आया था एक पॉइंट। No, very important to clear that. So what I could make out from this judgment and the implication really, that yes, you can love freely, you have the right to move freely, even with communities. Homosexuality is decriminalized, but yes, same-sex couples cannot under law under Indian Could law. you repeat the Correct last me if part, please? Indian same-sex couples cannot? couples cannot marry under Yes. Indian law. It is not Yes. legalized. So, like to comment anything on this? Like, what is the progress you see in the coming future? Is there anything which is going on regarding? If you could maybe comment on the same-sex couples getting married. Sure. So अभी क्या हो रहा है कि 18th of मैं देख रहा हूँ कैलेंडर, 18th of April is an important date, which is Tuesday. 18th of April एक लाइव हियरिंग होगा जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट विल बी हियरिंग द केस ऑफ सेम सेक्स मैरिज। दे विल बी लाइव स्ट्रीमिंग इट ऑल्सो। तो इसमें दोनों साइड्स, government of India and the petitioners will be talking about will be making their arguments कि same sex marriage legal क्यों होना चाहिए। अब तक इंडिया, हमारे कानून में हम पर्सनल लॉज फॉलो करते हैं, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड अनकोडिफाइड लॉज भी होते हैं। अनकोडिफाइड मतलब वो हमारे स्टैट्यूट बुक्स में नहीं है, बट दे आर स्टिल लॉज दैट आर फॉलोड बाय सर्टेन रिलीजियस कम्युनिटीज लाइक ट्राइबल कम्युनिटीज फॉर एग्जाम्पल। तो हमारे कंट्री में अनलाइक अदर वेस्टर्न कंट्रीज एक यूनिफॉर्म मैरिज लॉ नहीं है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो गवर्नमेंट बात का जो चर्चा चल रहा है, वो अभी तक हमारे कंट्री में नहीं है। हमारे कंट्री में जो शादी के लॉज है, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। तो जो सेम सेक्स मैरिज की बात चल रही है, अभी काफी सारे लोग सेम सेक्स कपल्स कोर्ट्स के पास गए हैं, ये बोले हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट है जो सेक्युलर एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है जहां पे लिखा है कि मैरिज बिटवीन टू हिंदूज, एंड देन देयर आर अदर पर्सनल लॉज आल्सो, लाइक I'm not able to remember at the top of my head, but there are other personal laws also that like the Foreign Marriage Act, which includes a marriage between an Indian and a foreign national. एक citizenship act भी है। तो जो petitioners बोल रहे हैं कि इन जो acts है, ये जो शादी के जो related acts है, इनको gender neutral बनाओ और इनमें same sex couples को भी include करो,
बिकॉज ये इंक्लूजन नहीं करने से आप हमारे फंडामेंटल राइट टू मैरी, जो मैंने पहले बोला था, इन्फ्रिंज हो रहा है। बट गवर्नमेंट का पोजीशन ये है कि ये हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज करंटली हमारे सारे जो लॉज है आर वेरी वेरी जेंडर स्पेसिफिक। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट में भी it is mentioned groom, it is mentioned wife, husband and wife is mentioned. If you read the entire act, you'll see the word husband wife appears. Hindu marriage act में भी bride groom and groom appears. Bride groom मतलब एक लड़की and groom मतलब लड़का, sorry, bride and groom. So bride means लड़की, groom means लड़का. तो जो गवर्नमेंट का मानना है कि हमारे जो लॉज है ये सारे जेंडर न्यूट्रल नहीं है, एंड अगर हम सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करेंगे तो फिर दूसरे चीजें भी आएंगे, जैसे अडॉप्शन, डोमेस्टिक वायलेंस। अभी हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसमें भी वायलेट उसमें भी द वर्ड वुमन अपीयर्स, विच इम्प्लाइज दैट द विक्टिम इज यूजुअली अ वुमन। तो गवर्नमेंट का ये पोजीशन है कि हमारा जो कानून है, जो एग्जिस्टिंग लॉज है, ये जेंडर्ड है। बट पेटिशनर्स बोल रहे हैं कि यू शुड मेक इट जेंडर न्यूट्रल, यू शुड मेक इट एप्लीकेबल टू सेम सेक्स पीपल ऑल्सो। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेंगे। अभी के लिए तो इट इज इट एज इट स्टैंड्स नाउ, हमारा जो मैरिज लॉज है अप्लाइज टू मेल्स, मेन एंड विमेन, नॉट सेम सेक्स कपल्स। तो अब देखते हैं, अप्रैल 18 को अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। अप्रैल 18 के बाद hearing is going to be live stream, तो I request everyone go to the Supreme Court of India का YouTube channel, subscribe करो, and Bar and Bench and I think Live Law will keep tweeting live updates, and I'm sure आप लोग भी इसका तो coverage करोगे, तो they can follow you as well, and we will get to know what the court is thinking, and then April 18th के बाद हमें पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिटन जजमेंट थोड़े बाद टाइम बाद आएगा, बट 18th को बस बात वो चर्चा होगी कोर्ट में। थैंक्स फॉर टेलिंग द डेट। आप सब लोग 18th अप्रैल को stay tuned, watch it on YouTube, or stay tuned with us. We will also publish what is being discussed. But please 18th अप्रैल बहुत ही important date है, because एक live stream होगा. It gives us an to hear the discussion which will go on that day. So please mark the date in your calendars and try and listen or read the tweets or read our stories. We'll also keep posting what will be discussed there. Very important date. So I will just go a little bit out of context on love and marriage, because in the previous questions we discussed about discrimination and and to some extent violence on the basis of gender identity or sexual orientation. So there are laws which gives identity, which gives you right to identify yourself. There are laws which have now homosexuality is decriminalized, but still, as you stated, that in society people do face discrimination because of their gender identity or sexual orientation. So what are the legal recourse available for a person when they face this discrimination or राइट, तो violence? ये काफी सैड रियलिटी है कि अभी भी वायलेंस पीपल फेस अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स समटाइम्स हु रियलाइज देयर गे, समटाइम्स इंटीमेट पार्टनर वायलेंस भी होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन यू हैव द राइट टू गो टू द पुलिस एंड फाइल एन एफआईआर। ये एक चीज आई थिंक हम काफी सारे लोग डरते भी है पुलिस से, बट वी शुड रिमेम्बर दैट इवन दो अगर आप एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से हो, आप ये जा कर सकते हो, आप पुलिस के पास जा सकते हो, आप रिटन एफआईआर फाइल कर सकते हो, और if you're being harassed online, you can also go on and apply and fill a cyber security you can basically report somebody for harassing you online, cyber bullying जैसे जो बोलते हैं, तो वो online एक option होता है, and offline option would be an FIR by going to a police station. I believe you can also file an FIR online these days. So you basically have the right to go to the police. Now, it's important to remember a couple of things कि हमारे country में जो Indian Penal Code है, जिसमें 377 था, it recognizes various offenses under the law.
तो ये जो 377 जो था, जिसका एक पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया था, दैट क्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी, यू कैन एक्चुअली यूज आईपीसी टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हरासमेंट एंड फ्रॉम वायलेंस. सो काफी सारे सेक्शंस है. आई विल जस्ट वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन अ कपल ऑफ देम and people can just take note of it. In IPC section 321, which talks about voluntarily causing hurt, which means that when अगर कोई है जो, अगर तुम homosexual हो, transgender हो, तुम्हें voluntarily मतलब intentionally तुम्हें मारता है, तो एंड ये करता है क्योंकि उनको पता है कि अगर तुम्हें ये मारेगा तुम्हें चोट लगेगी, वो एक ऑफेंस है. So if somebody takes a knife and tries to, cut your neck or pushes you or slaps you, तुम एक आईपीसी सेक्शन 321 के अंडर एक एफआईआर फाइल कर सकते हो. सिमिलरली आईपीसी सेक्शन 350 टॉक्स अबाउट इंटेंशनली यूजिंग फोर्स. लैंग्वेज थोड़ा में जाने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिमिलर, सेम थिंग. देन अगर कोई सीरियस ऑफेंस है, कभी कभी क्या होता है कि पीपल गो टू एन एक्सट्रीम लेवल, जैसे किसी को इतने बुरे तरीके से मारते हैं जैसे दे लूज देयर आई साइट, आंख मतलब ब्लाइंडनेस, किसी का कान काट देते हैं, किसी को इतना इतना मतलब दे हिट देम सो बैड दैट दे हैव देयर स्कल इज डैमेज्ड, या बोन्स को तोड़ देते हैं. कभी कभी होता है कि लोग एक साथ आके किसी को मारते हैं. हमने देखा है हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये मॉब वायलेंस अभी भी होती है. So that is an offense under section 320 called grievous hurt. Grievous is a word that means that it's extremely, extremely bad. जो previous offenses थे वो कम थे. This is more serious. So it includes things like destroying your eyesight, cutting off the ear, causing problems in the joints, impairing your joints, anything that causes suffering, extreme suffering. ये section 320 है. And section 322 is again similar, grievous hurt. तो ये सारे offenses है. And then section 503 of the IPC can be used for to protect you from intimidation. तो कभी कभी क्या लोग करते हैं कि जो मैंने पहले कहा था blackmail, लोग बोलेंगे कि मैंने तुम्हें देखा था पार्क में, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थे, मैं अब तुम्हारे मम्मी पापा को वो फोटो भेज दूंगा कि जिसमें तुम दोनों एक साथ बैठे थे, तुम दोनों हाथ छू रहे थे. आई एम गोइंग टू सेंड अ फोटो टू योर पेरेंट्स. So that is also a cognizable offense under IPC section 503, which focuses on criminal intimidation. So you could actually go to the police station. Now reality क्या है कि ये करना थोड़ा मुश्किल है, but the goal is कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि you have these rights. under Indian Penal Code you should know कि ये जो लोग कर रहे हैं तुम्हारे अगेंस्ट, ये कानून के खिलाफ है. एंड तुम्हारा हक है कि नॉट जस्ट इज इट डीक्रिमिनलाइज्ड, बट ऑल ऑफ दिस वायलेंस बीइंग कॉज्ड अगेंस्ट यू इज आल्सो क्रिमिनल ऑफेंसेस. नाउ दिस इज नॉट द सेम एज वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ जो मैंने बोला था, वो अलग बात है, वो अभी तक इंडिया में नहीं है. ये सब केस बाय केस बेसिस में अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, तुम इन आईपीसी सेक्शंस के द्वारा अगर आप lawyer से consult करना चाहते, you should consult a lawyer. But these are sections of the IPC that you can use and file a complaint in the police station. And उस complaint के द्वारा तुम अपने आप को protect कर सकते हो. Thanks for listing down the legal recourses जो लोग use कर सकते हैं अगर उनको कोई discrimination या violence वो face कर रहे हैं because of their gender or sexual orientation. So just one question which came on top of my head, that how does our fundamental rights play a role while we are facing any discrimination or violence on the basis of our identities and orientations, how we can sort of leverage them or use them to protect us? So all of this actually, these जो मैंने अभी बोला था IPC sections and जो मैंने court cases initially बताए थे, जैसे हादिया case, and then Lata Singh and the others, and Navtej of course, all of them come from our fundamental rights. तो हमारे constitution में part 3, constitution में हमारा जो constitution है, it includes multiple parts.
पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ये वो राइट्स है जो फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब इट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स। एंड ये जो नालसा जजमेंट था वो इसीलिए लैंडमार्क जजमेंट था बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज्ड थर्ड जेंडर as a category that deserve fundamental rights. Suresh Kaushal जो judgment था that did not recognize fundamental rights of LGBT community. लेकिन नवतेज ने ओवरटर्न किया था कौशल को एंड नवतेज ने बोला कि नहीं तुम लोग जो सुप्रीम कोर्ट पहले की जो सुप्रीम कोर्ट बेंच थी वो गलत थे। एक LGBT community has fundamental rights and let me just see if I can tell you what those rights are in Navtej. Just give me a minute. Yeah, it is Article 14, 15 and 19. So Article 14, 15 and 19 of the Indian Constitution applies to the LGBT community LGBT community and all Indian citizens, including women who see other groups. जैसे अगर हम abortion की बात करें, थोड़ा out of topic है, but कोर्ट ने ये भी बताया कि a woman's right to an abortion is a fundamental right. तो ये भी एक कम्युनिटी है। विमेन जो अबॉर्शन सीक करते हैं दे आर ऑल्सो स्टिग्मेटाइज्ड बाय सोसाइटी, उनके पास भी फंडामेंटल राइट है। एज आई सेड, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस, पीपल इन लिव इन रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ वी कैन इन्फोर्स देम इज दैट पहले तो हमें ये अंदर से एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि अगर मैं होमोसेक्सुअल हूँ, हाँ, या अगर मैं ट्रांसजेंडर हूँ, हाँ, सोसाइटी में शायद एक्सेप्टेंस ना मिलेगा, पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस ना मिलेगा, बट कानून के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये राइट्स है, हमारा फंडामेंटल राइट्स ये है। सो यू कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम अस। उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। आई होप दैट इज द थिंग, दैट लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। एंड देन द अदर थिंग इज, जो मैंने बोला कि जो भी ये जो ऑफेंसेस है, अगर कोई ब्लैकमेल करेगा तुम्हें या कोई तुम्हें मारेगा, जो भी करेगा, you have certain sections in the IPC that you can use to file an FIR against your oppressor. तो इससे तुम्हें ये मेरा मेजर टेक अवे इज दैट वी आर वेरी लकी दैट इंडिया में प्रोग्रेस स्लो है, बट प्रोग्रेस हो रहा है लॉ में, सोसाइटी में शायद उतना नहीं। एंड हमें डरना नहीं चाहिए कानून से, हमें एक्चुअली समझना चाहिए कानून को, बिकॉज कानून इट सीम्स इज ऑन आवर साइड। अब मैं ये नहीं बता सकता कि क्या आउटकम होगा अप्रैल 18 के जजमेंट में, बट I am quite hopeful because I feel like the cases that the petitioners are making are very strong, and जो नवतेज जजमेंट है वो बहुत ही पावरफुल जजमेंट है, बिकॉज उसमें बोला कि इट्स नेचुरल एंड नॉर्मल। तो अगर कोई तुम्हें बोलेगा कि तुम ये अब नॉर्मल हो, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए या ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तुम्हें बस सीधा उनको बोलो कि गूगल करो नवतेज जजमेंट 2018, डाउनलोड द डॉक्यूमेंट, फ्रीली अवेलेबल है, एंड वहां पे यू विल सी इट्स रिटन इन सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज नेचुरल एंड नॉर्मल। ये कोर्ट जज, दिस इज ऑफिशियल रिकॉर्ड, तो कोई ये नहीं बोल सकता है। सिमिलरली अगर कोई बोलेगा कि देयर आर ओनली टू जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, गॉड हैज क्रिएटेड टू जेंडर्स, ये अब अमेरिका में बहुत ये चर्चा हो रहा है कि ये ट्रांसजेंडर चीज एक अचानक से कुछ अचानक से पता नहीं कहां से आया है। यू जस्ट ओपन द नालसा जजमेंट, वहां पे लिखा है वी रिकॉग्नाइज थर्ड जेंडर। अगर कोई क्वेश्चन करेगा, बस उनको ओपन एनी गवर्नमेंट वेबसाइट, कोई भी फॉर्म खोलो, मे बी आप हॉस्पिटल, कोई भी आधार पैन कार्ड का वो, या इलेक्शन कमीशन वेबसाइट खोलो, पासपोर्ट एप्लीकेशन वेबसाइट खोलो, वहां पे तुम्हें दिखेगा थर्ड जेंडर ऑप्शन। एंड देन आई थिंक निसर्ग ने बोला, इंडियन साइकियाट्रिक एसोसिएशन सोसाइटी ने भी कहा है कि इट इज नेचुरल, इट इज नॉट अ मेंटल इलनेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेंटल इलनेस भी नहीं है। तो ये सारे प्रूफ है, तो ये फंडामेंटल राइट, इसीलिए आई फील लाइक वी हैव अ स्ट्रांग केस, बट लेट्स सी। Very hopeful, very hopeful. Fingers crossed. And I तभी because live streaming होगी, सभी के पास एक्सेस होगा सुनने के लिए क्या डिस्कशन हो रहा है. And as you mentioned, we have a very strong case. We have very strong previous to back us. So I hope, and I think everyone is hoping to get positive out of it. So stay tuned. April 18th, mark the date in your calendar. It's gonna be historic. Hoping it's gonna be really great for the community. And thank you so much, Kanan, for joining us today and explaining everything. Also,
I'm also explaining it in Hindi because I think a lot of our viewers are comfortable in Hindi. Because see, the major reason for having lives is to get the information to everyone so that everyone can have access to what how they can take legal recourse to fight anything which is happening against them, because now we know that we have the right to love. We have the right where we can identify ourselves. So I think it's very important for people to understand कि कौन से जज ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके क्या implications हैं, उनसे क्या राइट मिलते हैं, क्यों वो जजमेंट इम्पोर्टेंट है, और कैसे हम उन जजमेंट को एक आधार लेकर आगे की लाइफ में अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है दैट हम उन जजमेंट कर सकते हैं, एंड हम आगे जाके अपना लीगल जो हम लोग को राइट्स मिले हुए हैं, जो हम लोग को लॉ की तरफ से जो भी हम लोग को चीजें अवेलेबल हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच Kanan, and thank you so much Naya for doing these lives with us, because I think both the organizations have the same motive of getting the information to everyone so that everyone can use this information. Uh, Stay tuned for 18th of April, everyone, because it's gonna be a live streaming of the discussion at the Supreme Court. So, hoping for the best. Thanks everyone for joining. See you soon. Thanks, Kanan. Bye, Bye and thank bye. you everybody for joining in. See you.